Hello bachcho, let's read the question. The question says select the incorrect statement from the following. The options are linkage is an exception to the principle of independent assortment in heredity. Galactosemia is an inborn error of metabolism. Small population size results in random genetic drift in population. Baldness is a sex-limited trait. Now, the key concept for this question is sex influenced traits are autosomal qualities that are impacted by सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट का मतलब ये होता है ऑटोसोमल क्वालिटीज। ऑटोसोम्स होते हैं जो आपके 22 क्रोमोसोम्स हैं, जो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते, उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ independent assortment in heredity. Now this statement is true because जो linkage होती है, linkage is the tendency of closely packed genes on a chromosome. जो जैसे ये क्रोमोसोम है एंड अगर इसके ऊपर ये ए और बी है तो ए और बी की जो टेंडेंसी है टू क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे वो काफी कम है एज कंपेयर टू ए एंड डी, अगर ये एक जीन है और एक ये जीन है, बिकॉज ये दूर है एंड सिंस ए एंड बी पास है उनकी टेंडेंसी टू क्रॉस ओवर इज वेरी लो. सो लिंकेज is the tendency of closely placed genes to stay together during inheritance. जो completely linked genes होती हैं वो क्रॉस ओवर नहीं करती एंड उसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं दिखाती. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. The next statement is galactosemia is an inborn error of metabolism. This statement is also correct because galactosemia is an inborn error क्योंकि इसके अंदर आपका जो गैलेक्टोज है वो मेटाबोलाइज नहीं होता. गैलेक्टोज is not metabolized. Coming on to the next statement. The next statement is small population results in random genetic drift in population. Now this statement is also true. This statement is also true because the effect होता है genetic drift का, effect of genetic drift on a small population is much higher, is larger as compared to
a larger population or a big population. Now coming on to the last, now coming on to the last statement, baldness is a sex-limited trait. Now, this is the statement which is incorrect because baldness is an example. Baldness जो है is an example of sex influenced because which is governed by autosomal genes, which is governed which is governed by autosomal genes. So the so correct option is D. I hope you understood this question. All the very best.